फ्रेंड्स केमती अच्छे सब आशा कर आपण मैंने बहुत भल थे भी भल अच्छी बाकी देह टे ठंडा फंडा हो कमिज चलते आज भिडटा स्टार्ट करवा काली कही वीडियो हूँ आज सब ये प्रीवियस ईयर माने क्वेश्चन जी अच्छी से गुड़ा सब डिस्कसन करिया चलते से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा आउ गोटे कथा मुझे मुझे ग्रुप रे पठेदेवी से ग्रुप रे आपण मैंने जॉइन हूँ जॉइन हेल्ले जानीपारे केते कौ फटोटा दि जाऊँगी कि मटेरियालटा दि जाऊँगी जो जो वीडियो गुड़ा मुझे अपलोड करुँचे से वीडियो रिलेटेड से जो क्वेश्चन गुड़ा माने क्वेश्चन नहीं थियोरी गुड़ा ताको सब अपलोड करुँची मुझे प्लान कर गोटे दिन खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करी आट ए टाइम सब देवार तो पॉसिबल नुहे ना। चलते सांग मैंने ए पढ़ा स्टार्ट करवा आज पढ़ा आमर जो मुझे कही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एगुड़ा सब डिस्कसन करवा देखु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ हूँ जो हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द कौन सब अच्छी देख चलते आम पढ़ा द फास्ट इंडियन रूलर हु जॉइन द सब्सिडारी अलायंस वाज किए ना द निजाम ऑफ हैदराबाद तापर व्हिच रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपलसरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा यहाँ हूँ मैकाक्लाइस मिनिट्स 1835 तापर व्हिच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर एस्टाब्लिश्ड इन द ईयर 1816 इन इंडिया बेंगल गैजेट मो जेजेमा बसी तो ये पाखे बसी सी बसिक मत कौन कौन जेहेतु मुझे वीडियो आगु ये वाला वीडियो करी तो से कौन आउ कौन वीडियो करूनु ये करनु ठीक है छाड़न से कथा चलते पढ़ा स्टार्ट करवा व्हेन वाज द वैनकुलर प्रेस एक्ट एनाक्टेड व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड लिटन 1878 आफ्टर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस द लास्ट मुगल एम्पायर Bahadur Shah Jafar was explained by British and sent to which place among the following एटा हूँ रंगोन से करथिले तापर who among the following governor general who introduced the subsidiary alliance in India Lord Wolseley है तापर व्हिच वाज द फास्ट देखो जो जो थ्योरी गुड़ा मुझे पढ़े आपण मैंने क्वेश्चन गुड़ा देखिले तो आपण मैंने निहाती मन पड़ जाऊ कि एगुड़ा सब आम पढ़ी आसुँच थ्योरी से थ्योरी को बेस कर सब क्वेश्चन व्हिच वाज द फास्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया टू बी फोर्टिफाइड किए ना फोर्ट सेंट जॉर्ज तापर कौन आसले ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिसी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वालेसी टू हैव द ब्रिटिश सुप्रीम पावर इन इंडिया सब्सिडारी अलायंस को अलायंस ना सब्सिडारी अलायंस किए आपको फॉलो करथिले सब्सिडारी अलायंस फॉलो करथिले द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टाब्लिश्ड इन द ईयर 1784 सर विलियम Jones who was British official responsible of the Liberty Bill controversy Lord Ripon अपोस्ट कर लॉर्ड रिपन माने कौन करथिले सपोर्ट करथिले जे याको इंट्रोड्यूस करथिले किंतु अपोस्ट रे थिले हमर लॉर्ड लिटन तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शनल वेयर डिस्क्राइब्ड एज द 3 इंजिन्स ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट बाय लॉर्ड डालहाउसी से होजन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडियन कौन कौन होता ना रेलवे पोस्ट और टेलीग्राफ्स who was the responsible for the extermination of Pindaris in India Lord Hastings कहते कि आपको रेस्पॉन्स देते ना लॉर्ड हास्टिंग्स तापर देखो बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 coined named जुर्बे मुर्शिदाबाद हूँ मुर्शिदा क्वाली खान से कहते which British Governor General proposed for the abolishment of the pilgrim tax Lord Auckland who was the last viceroy and the first British Governor General to the India Lord Mountbatten तापर the measure was taken by Lord Dalhousie to earn the territories of Indian princely states the doctrine of lapse who introduced the civil service in India Lord Cornwallis जानते मुझे बार बार जो डिस्कसन करी तापर आसले कौन ना 2014
Muhammad Literacy Society was a historic society based in Kolkata for Muslims of South Asia in 1863. This society was founded by किए ना नवाब अब्दुल लतीफ लतीफ़ा व लतीफ अपन जहाँ भी प्रोनाउंस करें हुईज ट्रिटी वाज साइंड ऑन 16 August 1765 between Clive between the Mughal Emperor Sahab Alam and Saham Alam and second and Robert Clive of the East India Company as a result of the Battle of Buxton. এটা কোন না ট্রিটি অফ আলাহাবাদ রে কোউ ট্রিটি আনিছিল না ট্রিটি অফ আলাহাবাদ তারপরে when was the regulating act passed by the British East India Company India territories 1773. The administrative control over Indian passed from the British East India Company to the British Crown by the Queen's proclamation in the year 1858. Which of the following option was the main cause of victory of Robert Clive in the Battle of Plassey? Plassey କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ନା treachery of मीर जाफर जोटा आमर बैटल ऑफ पैलेसी जोटा हूँ आमर पलासी युद्ध है हुईच रूलर ऑफ मैसूर डायड इन 1799 ड्यूरिंग द 4th एंग्लो मैसूर वार जो टीपू सुल्तान तापर आसले कौन बाय हुईच ट्रिटी ब्रिटिश एक्वायर द दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद को ट्रिटी रे आनथिले ना ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे आस्थिला ए सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एटा होची सातारा who is the credited with the passing of Hindu widow remarriage act जानते हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट किए करथिले ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर तापर आमर जो आमर पंडित रमाबाई राजा राममोहन राय तांकर जो थ्योरी सब जहाँ भी आम तांकर लाइफ स्पैन जहाँ पढ़ते ता ओरिएंटेड किछिटा क्वेश्चन प्रीवियस इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां एंड द प्रॉफिट ऑफ ह्यूमनिज्म राजा राममोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोली कहा जाए तापर हु डिड एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया जानते विलियम बेंटिक हु डिड गिव द क्लाक्सियन कॉल गो बैक टू वेद किए कही ना स्वामी दयानंद सरस्वती कही तापर द अलीगढ़ मूवमेंट ओन्स इट ओरिजिन टू किए ना सार सायद अहमद खान है तापर 2016 रो किछि हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसां हु इज द आल्सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज राजा राममोहन राय इन 1875 द रूसियन हेलेना Blavatsky along with the America colon Harry Olcott and the few others founded which society na Theosophical Society who founded the Prathna Samaj 1867 eta jantibe Atmaram Pandurang widow remarriage act was passed in the year 1856 in which year was the All India Muslim League at leagues formed at Dhaka कोठी ना 1906 आमर को ईयर होता 1906 तापर आसले कौन हु एस्टाब्लिश्ड द सरदार सदन फॉर हेल्पिंग विडोज एंड ऑल्सो हैज रिटन अबाउट द अनइक्वल ट्रीटमेंट मेथड आउट टू द वुमेन ऑफ इंडिया पंडित रमाबाई 2017 हु इज द फादर ऑफ विनर ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाज किए करते ना यहाँ राजा राममोहन राय स्वामी विवेकानंद फाउंड और लॉन्च्ड द रामकृष्ण मिशन इन व्हिच ईयर 1893 हु फाउंडेड द विडो रिमैरेज एसोसिएशन इन 1858 विष्णु शास्त्री मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज प्रपोज्ड एंड स्टार्टेड बाय सायद अहमद खान तापर The first Indian Women University was set up on 1916 at Bombay. जोटा बॉम्बे सेटा तार अन्य ना हूँ मुंबई सेटा कोड होता ना कौन धोंडा केसर कर्व The first Indian Women University was set up on 1916 at Bombay. जनक बॉम्बे रे जगार होता हु एमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज गदाधर चट्टोपाध्याय बाय हिज पेरेंट्स and is also considered as a spiritual guru of Swami Vivekananda Ramakrishna Paramahansa. Swami Vivekananda found or launched the Ramakrishna mission in which year 1893 what founder
द विडो रीमैरेज एसोसिएशन 1850 विष्णु शास्त्री एटा देखो रिपीटेड क्वेश्चन आम या पूर्व यही क्वेश्चनटा पढ़ी आसिले विष्णु शास्त्री एटा पुणी सेकेंड पुणी 2016 में भी पकई मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज प्रपोज्ड बाय स्टार्टेड बाय के B.A B.Ed खान एटा भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी वाज सेट अप ऑन 1960 एट बॉम्बे से डॉक्टर दोंडाकेश्वर कौर तापर देखो पुणी बेटा आत्माराम रामकृष्ण मिशन तापर ये देखो स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इंडिया इन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वुड्स रिलीजियंस हेल्ड इन द ईयर 1893 एट हुईज प्लेस्ड एमंग द फॉलोअर्स चिकागो क्यों सहर में ना चिकागो सहर में करते द SNDP मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन हुईज स्टेट ऑफ इंडिया एमंग द फॉलोइंग केरला हु इज द फाउंडर ऑफ ए यंग बेंगल मूवमेंट हेनरी भाईवन देरजी से करथिले हमर फाउंड करथिले यंग बेंगल मूवमेंट फाउंड करथिले व्हेन वाज मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड 1875 हु एमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म एनविस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड किए करथिले एई जो कोटेशनटा किए कहिथिले वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड श्री नारायण गुरु से कॉन्सेप्टा देथिले तापर आसिले दी सतनामी ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ फॉर्म्ड सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन बेंगल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द मूवमेंट वाज फाउंडेड एंड लेड बाय गुरु गोएसी तापर बाबू राम सिंह एंड बाबू बल्लभ सिंह वेयर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट तांको ना होची कोन ना नामधानी मूवमेंट Which native state first signed the subsidiary alliance oath which native state na oath native state first sign करथिले subsidiary alliance पाई who is the viceroy of Indian who called for a conference at Simla in June 1945 to discuss about the plan formulated about the future of Indian which was the attended by the major Indian political parties Congress and Muslim League किए ना Lord Wavel the civil and disobedience movement was finally withdrawn in May 1934 who wrote कादम्बरी ना एटा होची बाना भत्ता आमर जी सी माने जो कादम्बरी बुकटा से लिखी थे तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग तक्षशिला तापर हु बिल्ड द स्तूप ऑफ संची इन मध्य प्रदेश अशोक करथिले तापर व्हेन डिड चालामी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ना चौरी चौरा चालामी ना मे भी हेइथिबो एटा मु ठीक से तो जानी पारनी ठीक अच्छे जब आपण मैंने जानते हैं मतलब कमेंट निहाती कहे यही क्वेश्चनटा देखो व्हेन डिड चालामी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस February 5, 1922 हु एमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधी एसोसिएशन विथ खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ आम छोट बेलू भी माने 10th 9th क्लास जो पढ़ी आसुँच आपने निहाती मन थी आपर व्हेन डिड जालियानवाग मेजर टुक प्लेस जोटा आमर जालियानवाला बाग जो हत्याकांडटा केबे हेइतिला 13 एप्रिल 1919 रे हेइतिला एटा भी आमे पढ़िथिले स्कूल टाइम रे तापर देखो which movement was supported by Mahatma Gandhi to maintain Hindu Muslim unity in India को मूवमेंट ना खिलाफत मूवमेंट द इंडियन नेशनल आर्मी INA देखो फुल फॉर्म प्राय सब पचारि दूजी INA रो फुल फॉर्म होची इंडियन नेशनल आर्मी वाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय किए करथिले ना कैप्टन मोहन सिंह से जो हमर इंडियन नेशनल आर्मी माने जो ये को कौन ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द ईयर ऑफ 1885 टू 1903 एटा किए ना मॉडरेट नेशनलिज्म रे हेतिला इन द ईयर 1908 हु वाज हैंग्ड फॉर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू किल अनपॉपुलर जज किंग्सफोर्ड एट मोजारफपुर एटा होची कोन खुदीराम बोस व्हिच ऑफ द फेज गिव बिलो इज रिगार्डेड एज द गांधीयन फेज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1949 to 1947 इन व्हिच ईयर द दिल्ली दुबार
as a major event took place when Lord Hardinge was the Viceroy of India 1920 ରୁ 1942 जोटा सुभाष चंद्र बोस करथिले। तापरे who led the peasant movement in Awadh during the non cooperation movement? बाबा रामचंद्र। Officially the first passenger train in India was hacked off on April 16, 1953. Which Indian leader went to Spain to show his country sympathy with Spanish Republic? एटा को इंडियन लीडर माने ए जिनसटा हेतिल माने के करिथिले ताका ना होची कोन डॉक्टर B.A आंबेडकर। सांग माने एबे हिस्ट्री रो जते भी प्रीवियस क्वेश्चन थिला सेगुडा सब एबे कवरेज हे गला। एबे चलंतु आमे हिस्ट्री गला परे एबे पढिबा पॉलिटी ओरिएंटेड जतिक क्वेश्चन अछि हमर प्रीवियस रो जतिक भी क्वेश्चन से ताकू एबे स्टार्ट करबा। चलंतु 2014 हाउ मेनी स्केड्यूल्स एटा मु स्केड्यूल्स पढ़ुचे मु कमेंट देखी ताकू जड़े भौणी कौन गोटे कही तो मुझे यहाँ प्रोनाउंस करी आपण मैंने जहाँ भी प्रोनाउंस करेंगे जदि मु भी भूल प्रोनाउंस करी मत क्षमा करेंगे। छाड़ू चलतु स्टार्ट करवा। हाउ मेनी स्केड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 12 स्केड्यूल। तब हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड टू राज्यसभा बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी? 238। व्हिच ऑफ द पार्लियामेंट यूनियन टेरिटोरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज? ये आपण मैंने कहे ये मत जना ना। तब व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर ए हाई कोर्ट जज? 62। गोटे हाई कोर्ट जे जज अच्छा रिटायरमेंट लास्ट एज केते दरकार? 62। यहाँ हूँ हाई कोर्ट 62 आउ जो सुप्रीम कोर्ट हूँ 65। यहाँ मन रखु हाई कोर्ट लास्ट एज जज 62 हेले से रिटायरमेंट करती आ सुप्रीम कोर्ट 65 हेले रिटायरमेंट एज आसी जाए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट? व्हिच स्टेट ऑफ इंडियन इज गिवन ए स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370? एटा जानथिबे जम्मू एंड काश्मीर जो 370 आर्टिकल ए दुटा आमर माने स्पेशल स्टेटस ये जो पाई जम्मू एंड काश्मीर आर्टिकल 370। व्हाट डज द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? व्हिच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? ओल्डेस्ट द फॉलोइंग हाई कोर्ट सरीटा जना नहीं मत आपण मैंने जानते कमेंट मत निहाती जनइबे। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गज प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट रूल? 352। आर्टिकल 352 रे प्रोवाइड होता आम प्रेसिडेंट रूल। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा? 13 इयर्स। तापर देखो नेक्स्ट पढ़ा 2015 आसले कौन ना हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हूँ आम महात्मा गांधी माने यहाँ आमर टी ऑप्शन थिला तो मुझे लिखिनी माने डायरेक्ट आंसरटा लिखी दीजिए। तापर देखो सारे जहाँ से अच्छा एटा किए माने करथिले ना मोहम्मद इकबाल। तापर हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट? जस्टिस अमिय कुमारी पाढ़ी। सी हूँ आमर फास्ट वुमेन जज जे थिले। हु इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट? गवर्नर ऑफ स्टेट। द मेंबर ऑफ द व्हिच कमिटी आर एंटायरली डाउन फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा एस्टिमेट कमिटी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी? एटा हमर डिलीट हो सारी। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 395। हमर माने जितला आगुरु एबे तो करेंटली माने अधिक हेलानी किंतु हमर पर्टिकुलर जदी हमें ओरिजिनली माने कहंती सेटा होची 395। व्हिच फंडामेंटल राइट गारंटी फ्रीडम ऑफ प्रेस? राइट टू फ्रीडम। What is the provide article 368 of the constitution amendment of the constitution? तापर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ कौन? पार्लियामेंट क्यों कहा को नहीं कंसिस्ट करे? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। हु रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय कौटू ना भोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा? इथिरे हम रिमूव कराई जाई परिबो को प्राइम मिनिस्टर को एई मोशन आसिले नो कॉन्फिडेंस मोशन। तापर देखो हु वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीवी माभलकर सी हूँ आमर फास्ट स्पीकर। तापर फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी फॉर्मुलेटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 360। देखो मुझे आपण मानू कही ना सब पॉलिटी रे आपण टिके ध्यान देवे बेसी होची आर्टिकल एठी आपण माने डिस्कशन माने जतिक भी डिस्कशन कलोनी केटा निहाती 5टा आसिला ना आर्टिकल
तो आर्टिकल ऊपर टिके बेसी ध्यान देबे। नेम ऑफ द सेकंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर जाकिर हुसैन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली मुकुंद प्रसाद दास, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट जस्टिस वीरकिशोर राय। सी हूँ आम फास्ट चीफ जस्टिस हूँ ओडिशा हाईकोर्टर फास्ट चीफ जस्टिस जी थे सी हूँ जस्टिस वीरकिशोर राय। 2016 देखो किसी सिलेक्शन क्वेश्चन, ही बिकेम the first Indian judge in the International Court of Justice in 1950 to 54. Sir Bengal Narsingh Rao. The Constitution of India was originally divided into how many parts? 22 parts. Which article of the Indian Constitution provides election to the House of the People and the Legislative Assembly of State on the basis of adult suffrage? Article 326. Which right has been given the status of a fundamental right under Article 91 of the Indian Constitution in 2005, the right to information. How many seats in the parliament are rejected for the scheduled caste as per the delimitation and assembly constitution under 84? How many amendments have been made to Indian Constitution as of August 2015? Sorry, 100. She was the first women high court judge in Indian, Miss Anna Chandi. सी होउछन्ती हमर फास्ट वुमेन हाई कोर्ट रो जज इंडिया रो। आर्टिकल 81 ए प्रोवाइडेड फॉर एन एटा माने एटा आर्टिकल 81 ए प्रोवाइड ताको माने ए जिंसटा प्रोवाइड करे। एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर इन द लोकसभा 450. Federation with a strong center is adopted from the country's constitution. Canada constitution. Who appoint the Attorney General of India? President. Which one of the following right of Indian Constitution guarantee all fundamental right to every resident of country? Right to equality. Which one of the following is true with respect to fundamental rights of Indian Constitution? Equality of opportunity for all residents. In which part of Indian Constitution fundamental rights are provided? फंडामेंटल राइट्स आमर को पार्ट रो आसी पार्ट 3 आ डीपीएसपी आपण जानथिबे पार्ट 4 डीपीएसपी माने जोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेटा हो हमर पार्ट 4 आ एटा हो हमर पार्ट 3 आ जोटा हमर रहिला फंडामेंटल ड्यूटीज एटा आपण माने कमेंट रे कहबे मु तो एटा पढै सारी छी आपण माने एटा कमेंट रे कहबे फंडामेंटल ड्यूटीज टा पार्ट केते रे जाउ छी हैला। तापर आसले हमर कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन्जॉयज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूएसए को गवर्नमेंट ना यूएसए गवर्नमेंट। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द parliamentary form of government is the Indian polity. Which one is supreme? The constitution. जोड़ा ए को देखंतु इन इंडिया मुटा टिके जे माने भूल लिखि देथिले आपण मानन को एथिरे कहि दोछि देखंतु द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द parliamentary form of government is the एटा होछि sovereignty of the parliament. The in Indian polity which one is supreme? एटा होछि constitution. तापर देखंतु which is popularly known as chief minister चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा कि हमर माने चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहा को कहा जाय? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तापर देखंतु तापर एटा तो आपण मानु द वैल्यू ऑफ सेकुलरिज्म कैन बी फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एट द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज आ फंडामेंटल राइट्स। ए चारटा को हमर बहुत वैल्यू करे तो से जिनसा लिखाई द करंट लोकसभा इज द 16th लोकसभा। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रेफर्ड टू ए सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट बिगिन विथ कौन ना को ये को नहीं हुए क्वेश्चन आवर आ 0 आवर। हु इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन सिचुएट सॉरी भूल टिके कहीदेली होयर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड दिल्ली। तापर होची कोन ना हु अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट।
एटा हु इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड एटा गला दिल्ली तापर हु अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटा होची प्रेसिडेंट व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट 62 देखो मुझे कही यहाँ देखो रिपीटेड क्वेश्चन पुणी माने जो आमर हाईकोर्ट रो जे जज था माने मैक्सिमम एज रिटायरमेंट केते थाए ना 62 तापर देखो अंडर हुईच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ कही सुप्रीम कोर्टा के सुप्रीम कोर्ट रो जज को केते हाईकोर्ट रो जज को केते एज आपण माने रिटायरमेंट तो रिक्वायर करती आप मन थी सेटा हूँ 65 एटा हूँ 62 अंडर हुईच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल द इमरजेंसी द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे vary आर्टिकल 360 which form of government has been accepted by the Indian constitution parliamentary according to the Indian constitution which of the following is incorrect under right to freedom assembly peacefully and with arms according to the according to the rules of the Indian parliament a money bill should be introduced by लोक सभा मनी बिल आमर इंट्रोड्यूस कोठी हुए लोक सभा रे ही हुए तापर देखो अंडर व्हिच आर्टिकल द राइट टू फ्रीडम इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 which of the following is regarded as the guardian and protector of people's fundamental rights in India Supreme Court of India तापर देखो which amendment removal the sorry टिके रुंदु पवनटा हो जे उड़ी जाउ हाँ which amendment remove the right to property as one of the fundamental right of Indian Constitution 44th Amendment Act under which jurisdiction Supreme Court can review the discussion of High Court appellate jurisdiction who was the elected as the permanent president of the Constituent Assembly of India after its first meeting in the year 1947 Dr. Rajendra Prasad which branch of the Indian government in the Indian democracy is responsible for executing and implementing policy what is executive which of the following is a connect region of indicates that India is regarded as the secular nation as per the preamble of the constitution of India gives equal right to all regional of India who was the chairman of the drafting committee for the constitution of the Constituent Assembly of India our drafting committee के chairman थिले ना Dr. B.A B.Ed which among the following is layer the teams used in preamble of the Indian Constitution Republic the split between the extremists and the moderators came off in the open at the Surat Congress session in which year among the following 1907 year रे हेथिला यहाँ पर देखो व्हाट वाज द verdict of Supreme Court on the Goloknath case versus State of Punjab but our parliament does not have the power to abrogate fundamental right who said preamble as the identity card of the constitution N.A. पालखीवाल कही कि प्रियाम्बुल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियाम्बुलटा हूँ आम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे आइडेंटिटी कार्ड टाइप काम करे 2021 देखो किसी सिलेक्शन क्वेश्चन 2022 तो यहाँ यूठू है आपंकर आज पॉलिटी और हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन सर तो यहाँ मुझे आपण मानक पठेदेवी ग्रुप्रे जो मैंने भी आप मो ग्रुप्रे जॉइन होना तो से ग्रुप्रे व्हाट्सएप ग्रुप्रे डिस्क्रिप्शन दि जाए से ग्रुप्रे आपण मैंने जॉइन हूँ आपण मैंने जानीपर तापर देखो 2021 which of the following provision articles from fundamental right of Indian Constitution is directly associated to the exploitation of children article 23 to 24 which pair of articles from the following are associated to the fundamental rights that cannot be suspended during the enforcement of emergency under article 359 of the Indian Constitution article 20 to article 21 which of the following constitutional amendment nullified the privacy purses and privileges of Indian prince 26th amendment which is the maximum permissible number of member in the legislative assembly of each state as per Indian Constitution 500 members. The Supreme Court has
The Supreme Court has which of the following jurisdiction original, appellated, out advisory. The rules of regulation for the practice and procedure of Supreme Court under Article 145 of the Constitution of India. Constitution of India are made by Supreme Court with the approval of President of India. Which article of the Indian Constitution deals with the abolition of creation of legislative council in states? Article 169. तापर Magna Carta हमर part 3 रे अछि. If there is pendency is proceeding of a court, them in which of the following writ is issued prohibition. तापर देखो generally what is the main objective of the adjournment motion in Parliament of India? Discuss defined matter of urgent republic importance. तापर देखो तापर आसला कौन, व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डीपीएसपी रो फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रे पर्पज करा जायथिला. Which article of the Indian Constitution mention that the Supreme Court shall be a court of record and shall have all powers such a court including the power to punish for contempt of itself. Article 129. State legislature is decided by Speaker of Legislative Assembly. Power of Parliament to amend the Constitution is mentioned in which of following article of the Indian Constitution? Article 368. Who among the following option is termed as the first law officer of India? Attorney General of India. Which article of the Indian Constitution states the power to issue writs for the enforcement? आपण जानथिबे हमर 5टा writs अछि. 5टा writs कोन कोन आपण मानू पढ़ला बेले कहितली. आपण माने से 5टा writs कोन अछि हमर से 5टा writs मते कमेंट रे जणैबे. The enforcement of the fundamental rights vested in the Supreme Court and the High Court, both Article 32 and Article 2 to 6 हैला. तापर आसला हमर कोन 2000 देखो 2021 गले. अब 2022 रे कोन केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेक्युलर स्टेट. आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन describe India as union of states. Which article deals with protection of life and personal liberty? Article 21. देखो एटा मु कहितली लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमर को आर्टिकल जे आर्टिकल 21 रे. देखो आम थ्योरी पढ़ी सारापर आपण मानक निहाती ये जो क्वेश्चन गुड़ा देखला माने निहाती आपको टे इजी लगुवा ना ना माने मु तो थ्योरी पढ़ी सारापर ये क्वेश्चन देखला मत माने मोर मन पड़ जाऊँ कि हाँ मुझे जिनसा एति टाइम पढ़ी थी. तो आप मत लगुच आपण मानकर भी निहाती मन पड़ो. तो ठीक अच्छे माने छाड़तु ए स्टार्ट करिया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ 6 फंडामेंटल फ्रीडम? आमर को आर्टिकल 6 फंडामेंटल फ्रीडम डील्स करथिला? हेडा होची आर्टिकल 19. तापर देखो which of the following is entrusted with the specific power to create to new all India service? एटा देखो रिपीटेड क्वेश्चन. राज्यसभा. who decide whether a bill is money bill? एटा मु कहतली मनी बिल टा हमर कोठी पास हुए बा कोठी हुए एटा कोड ना स्पीकर ऑफ लोकसभा रे मनी बिल हुए. how many members can be nominated by the president of India to the राज्यसभा? 12. हमर केतरा मेंबर अछन? 12 जण मेंबर को नॉमिनेट करा जाय राज्यसभा रे. द डिस्प्यूट देखो तापर द dispute between the union and the states can be decided by the Supreme Court under original jurisdiction. What is the age of retirement of the judge of High Court? Article 62. सॉरी माने जज कर हाईकोर्ट जी हाईकोर्ट जज था रिटायरमेंट एज के कहती 62. देखो ये पुणी 2000 देखो ये 2021 रे पड़ी 22 रे भी ये पड़ी देखो आ 2017 ना 16 जोड़ा देखो से भी पड़ी 62. ये जो क्वेश्चन देखो गोटे क्वेश्चन केते थर रिपीटेड होइछि. हु वाज द अल्टीमेट पावर टू क्रिएट और अबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स? एटा हूँ कौन ना पार्लियामेंट.
पार्लियामेंट करा जाए पार्लियामेंट अल्टीमेट पावर टू क्रिएट हुए आबोलिश करा जाए तापर देखो 2023 किछिटा 2023 किछिटा इंपोर्टेंट जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हिच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर रिकमेंडेड बाय द प्रियाम्बुल देखो यहाँ किसी ऑप्शन में थिला तो आपण मैंने एमती क्रोनोलोजिकल पूरा माने ऑर्डर रे पूरा जो सजेकी लिखती पूरा माने एपट सेपट हो सब थी तो मुझे देखो लिखी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ हूँ माने करेक्ट जोटा करेक्ट फॉर्म रे लिखाई यार अल्टरनेटिव फास्ट थी सोशलिस्ट तापर सेकुलर तापर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एमती माने बहुत सारा थाए माने ऑप्शन तो आपन को एगुड़ा जब मन रख आप पूरा भलसे मन रखिथे क्रोनोलोजिकली ऑर्डर रे पूरा मन रखिथे तो आपको एग्जाम रे हेल्पफुल हम तो एमती मन यहाँ ही एक्चुअली हूँ यार करेक्ट फॉर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ आप जानते हैं आम जो प्रियाम्बुल अच्छी प्रियाम्बुल यहाँ पूरा क्लीयरली लिखाई व्हिच वन is not a salient feature of the constitution of India rigid constitution who presides over joint session of parliament speaker of Lok Sabha which state below has no second chamber legislative council तापर देखो एटा कोठी हेतला which state रे मध्य प्रदेश who appoint the judge of high court president what is the importance of article 143 रे हमरो इंपोर्टेंस कौन अच्छी ना प्रोविजन विथ रिगार्ड जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 143 रे माने 143 रे हमरो को जिनसटा लिखाई जे ना प्रोविजन विथ रिगार्ड टू जुडिशियल रिव्यू को माने प्रोविजन दिया जिबा जिनस माने केमिति हमर जुडिशियल रिव्यूटा माने एते खाली मन रखिबे एते जदी लंबा लाइन भी मन न रहउची खाली मन रखिबे आर्टिकल 143 होउची जुडिशियल रिव्यू तापर देखो आर्टिकल 143 द बेस एटा टिक मु स्किप करी जे मु जानिनी ता आंसर तापर देखो बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन by which amendment of the Indian Constitution the right to property was removed from the list of fundamental rights article कोडा ना सॉरी एटा को अमेंडमेंट द्वारा माने जो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव हेतला को आर्टिकल ना 44th अमेंडमेंट द्वारा हमरो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी हमर एटा रिमूव हेतला तापर देखो तापर आसला पॉलिटिकल सिस्टम जोटा नेक्स्ट वीडियो रे हेतला तो तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें हाँ सांग मैंने एबे तो संध्या हो गलानी वीडियोटा आज जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी थिला ताको तो सब डिस्कसन करदेली आउ केवल हिस्ट्री आउ पॉलिटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिछि कारण वीडियोटा बहुत लॉन्ग हो जाउछि लॉन्ग है आपण मैंने देखिया को मे भी पसंद करना कि वीडियो अपलोड है टे प्रोब्लेम होची सर्वर पर तो जहाँ भी तो ठीक अच्छे ए वीडियोटा आम ये रखुच्छी जदि आपको मो वीडियोटा आज भल लगुव देन कौन करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें जो मैंने भी मो चैनल को नुआ विजिट कर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट कर समस्ते सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ठीक अच्छे एवं मुझे रखुच्छी टाटा जय जगन्नाथ।